Hello, dear students. Good morning. Welcome to English class. I am your teacher. And today we shall start English grammar. This we have to study in CBCS semester 1, AEC 01. There we have to study English grammar. So, on special demand of students, today I shall teach you in bilingual mode. I'll not only teach in English, but I'll use Hindi because that would be required and that would be helpful in understanding it. So, let's start. The main requirement for writing or speaking English, you need to make a sentence. Many a time, what happens with those who learn English as a second language, that we start first listening and then we translate it, and then after that we start making the answer in our language, and then again we translate it, and then we speak it. So for that, translation becomes very important, and for that only, in AEC and in your MIC and in other exams, translation is very important. And for translation, the basic starts from tenses. So today we shall start tense. We shall start today tense. So, however, most of you are aware of the types of tenses. Many of you must have studied it, but still, some of you have requested that I should elaborate it and talk in detail so that you do not miss anything while translating. If you understand tense properly, then 50% of your translation will be completely clear and correct. So, you know, tenses are of three types. Okay, so no problem up to here. Tenses we divide into, I'll go briefly and I'll focus only there where you need more attention. So, this, tenses we divide into present, past, and future. Present tense, past tense, and future tense. Okay, fine. Now come to again the subtypes. This you will have to bear in your mind. The subtypes.
Okay, so you got it. We divide tenses into three parts. Again, the three parts will be divided into four subparts. This only you have to bear in the mind first. Present tense we divide into simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. This simple present tense in traditional English grammars, in old English grammars, they used to call it present indefinite tense. This the same. There is no problem in name. Let it be called by simple present tense name or let it be called by present indefinite tense name. No problem. It is the same. So simple present tense, present continuous tense. This was earlier called present imperfect tense. So call it present imperfect tense or present continuous tense. However, we shall go with the new nomenclature, that is simple present tense, and then we shall let us call it present continuous tense. Then is present perfect tense, present perfect continuous tense. Clear the names? Again, it will be the same in past tense also. Same type, same type. See, the first one we shall call simple past tense. Let us call T for tense, as we have already written. So past continuous, the spelling you can see from there. Past continuous tense, T for tense. I am going in brief. Then past perfect tense, and the last one past perfect continuous tense. Okay, same four types will be there for future. Simple future tense, F for future, T for tense. Future continuous tense. I hope it will be clear. Future perfect tense, and the last one future perfect continuous tense. Clear? However, we do not require the last one, but still for nomenclature and for understanding we shall discuss it. So this was the basic, this was the starting of the tenses. Now let us discuss all of them one by one in detail. Remember what was the first subtype of present tense? Let us start with present tense first. We can start with any. We can start with any, but let us start with first present tense. So in present tense, what was the first type? Simple present tense, right? Fine. Now is the need to understand through our bilingual medium, because I told you in the beginning, many a time what happens when we interact with anyone, when we are communicating in English with anyone, we as second learner, why I'm calling second learner? Second learner we say because first language is the first learner. When we start learning, how we start? We do not start our language learning
by English only. Our mother tongue may be Hindi or maybe Bhojpuri or whatever language is our mother tongue, our mother language, that is our first language. English becomes our target language. So English becomes our second language. And so everybody becomes a second learner, second language learner. So for this, we shall go by the help of some Hindi words. So simple present tense. First of all, we shall have to identify. I'll now come to Hindi. जब हम लोग बात करते हैं तो जब ट्रांसलेशन बनाने को आता है तो हमें कैसे ट्रांसलेशन बनाना चाहिए, तो सबसे आसान तरीका है कि उसके लास्ट में देखना चाहिए वाक्य खत्म कहाँ हो रहा है, वाक्य के अंत में क्या है, वाक्य के अंत में क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान क्या होती है? पे अटेंशन हियर। क्या है पहचान इसकी, क्या है? हम 12 तरह के टेंस के बारे में चर्चा करेंगे और हम हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाने के लिए चाहे किसी भी प्रकार का वाक्य मिले वो 12 तरह से कैटेगराइज हो जाएगा। 12 क्यों बोल रहे हैं? 3 टेंसेज, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके 4 सब टाइप्स, तो 4 3 जा 12। तो इसमें एक एक करके सबको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इन ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लें, दिमाग में रख लें, याद कर लें, तो फिर आपको न दोबारा टेंस पढ़ने की ज़रूरत होगी और ना ही आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत होगी। तो क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि उस वाक्य के अंत में क्या लगा है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हो, ते है इत्यादि में से कोई भी लगा रहता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहां SPT लिखा मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ताहू तीहू लगा रहता है उसे क्या करना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। जैसे रमन क्रिकेट खेलता है, रमन क्रिकेट खेलता है, तो इसमें क्या लगा है, ता है लगा है। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या होगा, इसका क्या होगा, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा इसका, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले
सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसमें एस या ईएस लगा रहेगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल होगा। क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो क्या क्या था हमारा सेंटेंस, रमन क्रिकेट खेलता है। अब उसको हम देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, रमन क्या है, सब्जेक्ट है, करता है, काम करने वाला है, नाउन है। काम करने वाला कौन है, हम सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं किसी वाक्य में, तो हम पूछते हैं काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है तो रमन कर रहा है, तो रमन क्या है, सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है, क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है, तो काम मतलब वर्ब, क्रिया, तो क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है, ये वर्ब है ना। सॉरी, वर्ब है। अब हम आते हैं, क्या खेल रहा है, वो कौन खेल रहा है, रमन, रमन क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो वो वर्ब है। अब क्या खेल रहा है, कोई काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, तो वो क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सीधी बात है, सब्जेक्ट ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट को यहां लाते हैं, रमन वर्ब है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, प्ले, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में तब बताएंगे कि यहाँ जब नाम होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, तो वहाँ पे हम एस या एस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई है लास्ट में, इसलिए यहाँ पर केवल एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रमन प्लेज। अब क्या है, ऑब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एस या एस जरूरत थी है कि नहीं, हाँ है, तो एस लगा दिया, एस लगा दिया। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, रमन प्लेज क्रिकेट, बन गया। कितना आसान है, रमन क्रिकेट खेलता है, हिंदी में दिया हुआ है, हमें उसकी अंग्रेजी बनानी है, हमने उसको बना दिया रमन प्लेज क्रिकेट, नो प्रॉब्लम। अब इसका डिटेल में देखना है, डिटेल में देखना है, इसका डिटेल एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जस्ट जस्ट अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू फॉर द ब्रेक, स्टॉप करिए।